Okay, dear learners, welcome to today's class. So, Professor Mohanty is present now. So, I am not wasting much time. Straight away, request to Professor Mohanty to start his presentation today. Professor Mohanty, I will hand over the session to you. Thank you, sir. Thank you. So, dear students, a very good afternoon to you all. Last class, we all discussed about the Indian diaspora who were basically we were talking about the people of Indian origin, the PIOs, who were a product of the old diaspora. And today we will be talking about the Indian diaspora who were relatively the recent migrants, and I will cite cases, one of three different continents. One is of Europe, then second is North America, and then Australasia. So I'll just put the PPTs so that you can have a look. Can you see it? Can you see the PPT? Someone please respond. देखी पार्चो कि नहीं PPT टा? Okay. So it's about block 3, and we will be taking up the next 3 units from block 3. As I told you, we are dealing with the Indian diaspora in Europe, in North America, and in Australasia today. And I'll just give you a brief introduction of the situation, what it was like in Europe. And if you look at the historical, some of the historical facts, you will see that immigration started in Europe during the second half of 20th century. And basically, Europeans, they always look for skilled laborer and professionals, because the first wave of migration that we have already discussed, it was meant for the plantation sites in the different colonies, whether it was in the Caribbeans or in Southeast Asia, the colonies like Malaysia or Mauritius, or in east part of Africa. So basically these were all the plantation sites. But today what we are talking about the metropolitan, the core of this colonial legacy. And here you will see that for a very long period of time, there wasn't much migration, and it was the stream started in the second half of the 20th century. And mostly it was the skilled professionals, be it doctors, scientists, or engineers, or academicians that they were looking for. If you want me to be bilingual, mostly professional जो माने कि डॉक्टर इंजीनियर एमतिया सब प्रोफाइल रो माइग्रेंट्स मानु को यूरोप इनवाइट करथुला माने इट गेव एन अपॉर्चुनिटी second half of 20th century. Europe as a continent, it has 45 countries, and the idea of European Union as a region, it emerged in 1993. So here you will see that we have migrations of different varieties. You have PIOs, that is people of Indian origin, you have the NRIs, and it varies from countries to countries. Largest presence of Indian diaspora was seen in Britain. Sabutu adhika Indians Britain ra disanti. Then you'll find them in Netherlands, Portugal, Italy, France, and mostly they are either the professionals or the businessmen. Basically, they are the business class people. And then you have a middle range Indian, कि मझा मझी, अति बेसी नहीं कि अति क्या कम नहीं. These population you will find mostly in Greece, Spain, Russia, Switzerland, Sweden, Austria, Denmark, Ireland, Norway. जो ठीक है, both skilled and semi-skilled professional भी थिबे, industrialist भी थिबे. এই প্রকার কোটে population তমে দেখিবো.
and the least population सबुठु अल्प इंडियंस देखिया को मिलंती साइप्रस रे, आर्मेनिया रे, स्लोवाकिया, बुल्गारिया. It has got professionals and businessmen as well. So, if you look at the background of Indian diaspora in Europe, if you look at historically, you will see that we can divide this entire stream of migration into two phases. Dita bhagare ame migration dita stage re heichi boli ame bhabi pariba Europe re. Kona na first from ancient times to Second World War. We will take it as one phase. Second phase is after the post Second World War time. First up, we will refer to as old diaspora, and the post-war Second World War period, we will refer to it as the new diaspora. And here you will see, we have stories of King Solomon, Queen of Sheba. In this anecdotes achi. These are all, I don't know, they are historical or semi-mythical characters, and we have heard about these queens and kings who have procured spices from India, and it was very popular. Indian spices, Indian items were extremely popular in those days. And we have heard that it was visited by seafarers, जो माने समुद्र रे जाउथिले वाणिज्य करिया पे, merchants, exiled prince. किछटा एग्जांपल्स भी अछि तम टेक्स्ट रे तमे देखिबो. प्रिंसेस तो जो भी राजकुमार मान के एक्साइल करा दियाइतला, यूरोप वाज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर देम. And during the colonial times, mostly in the 19th century, you will see that they brought Indians to the continent, basically in form of clerks, traders, teachers to Europe. अति हाई प्रोफेशनल्स नथिले कि अति माने पूरा तमे मैनुअल लेबर कैटेगरी भी पाइबनी यूरोप रे. So basically somebody who was semi skilled or they have certain kinds of skill, even if they were not completely high skilled when we are talking about the old diaspora. But the trend changed after Second World War. This was the new diaspora, and Europe during this period of time, it was referring to the demand supply of those times, and there was a demand for labor in the post-war period. काहीकि लेबर डिमांड थिला कारण युद्ध होई सरला परे सेकंड वर्ल्ड वॉर परे देयर वाज ह्यूज डैमेज, मैसिव डैमेज हे सरथिला देशर इकोनॉमी, देशर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड रेस्टोरेशन वाज रिक्वायर्ड. वी नीडेड पीपल, लोक दरकार थिला जो माने कि ताकू से जो रेस्टोरेशन काम रे हेल्प करबे टू रीबिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. So, they started relaxing the immigration laws way back in 1960s. So, it was during that period of time when you will see highest number of Indians emigrated after 1960s. Then, ये जो brain drain syndrome आमे जो situation टा discuss करथिले first two classes रे, you will see that actually emerged during the 60s. Prior to that, we never heard of this concept brain drain, because mostly it was the indentured laborers who were migrating. Migrant laborers. जदि आमे migration कथा perhaps जदि Second World War पूर्वरु आमे करूथिले, आमे गोटे हमर क्लास स्टेटस आसी जाइतला जे गोटे okay they are the manual laborers. सेटा गोटे perception सेमति हितला, because hardly the skilled ones actually migrated in those times. So it was only after the 60s that you will find the brain drain syndrome developing in Europe. And Portugal, you will see that it has a considerable number of PIOs, people of Indian origin. Portugal re jo people of Indian origin thile, they were twice migrants from Mozambique. तुमको मने अछि को तुमको कहितली कि लास्ट क्लास रे तरा मैं ईस्ट अफ्रीका रो हिस्ट्री डिस्कस करले, द डायस्पोरिक हिस्ट्री. We found that certain African countries like Kenya, Uganda, they were having a policy restructuration. ताको policy change करथिले जोतरे कि जो माने अलगा ethnicity रो थिले, जो माने अलगा देशरु migrants आसीथिले अफ्रीका को, they were not giving them equal status as the Africans. तेनु बाध्य होई कि किछटा Indians जो माने they were doing very well, बहुत भलो करूथिले business wise, economy wise, they had to migrate. इंडिया रे जेहेतु इकोनॉमिक्स कंडीशन एते भलो नथिला, तेनु से माने कोठी के जिवे सबबळे से माने भाबुथिले, एंड ब्रिटेन वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस. ता भितरु
कि बहुत लोग मोजाम्बिक रू which is an African country Portugal पळैतले because it was under Portuguese rule. Then France also had certain skilled and unskilled laborers, and since it was the art, seat of art, architecture, culture, जेतले हमें art कथा कहू, जेतले हमें any paintings कथा कहू, sculptures कथा कहू, सबले Paris वाइड रे आसे. तेनु that was the best hub for artists and sculptures of Indian origin. जो माने भी Indians जो माने भी चाहूଥିଲେ जिबाकू से माने सेमानक पे Paris टा गोटे destination थिला for artists. Then we can talk about Netherlands. Mostly it had an Indian diaspora from Suriname, and later on it started getting professionals. Then in Belgium, Indians were less, but they were mostly diamond traders, so they were rich. Germany, it was professionals, high skilled professionals. And you will see that the third emigration wave took place in the 1980s. 80s re gote third wave asila of emigration. Kona? Now it was the reimposition of immigration restrictions leading to professional immigrant entries. माने खाली प्रोफेशनल्स जेमिति बेसी पसी परिबे से टाइप रो गोटे लॉ क्रिएट हला. अब फोर्थ वेव ता आसिला 90s रे जोटा कि ए टाइम रे तमे देखुछो देयर इज अ सर्ज ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स ट्रैवलिंग टू various part of the world. Basically it was about the IT people, fourth wave. So we have started talking about 4 waves of migration in Europe. We will take up the case of UK, Great Britain. Since it was a colonial ruler, it had a imperialistic regime, and today you will see that because of our background with British colonialism, the connectivity between UK and India was immense. You will see that UK has the maximum number of Indians in Europe. Europe रे जेतिकी भी Indians अछंती सबुठु अधिक UK रे अछंती Britain रे. First immigrants were Parsis और Bengalis जो माने कि 18th century ट्रैवल करथिले. कारण ब्रिटेन रे तमे देखिबो सेठी ना प्लांटेशन साइट्स अछि कि ये अछि तेनो इंडेंजर्ड लेबर एते से नै कि हमें जति कि एग्रीकल्चरल साइट्स को बहुत इंडियंस जाइथिले. तेनो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेंट्स टू UK were the Parsis जो माने कि 18th century रे जाइथिले for trading purposes. After World Wars, bulk of Indian professionals entered. World War ପରେ ही किछटा Indian professionals enter करि परले European land को. Then 1950s, it was mostly the Punjabis who went for reconstruction work. World War ପରେ मुझे कहली एति भी क्षति हेतला ता reconstruction पे पंजाबी माने बहुत माइग्रेट करथे 1950s रे. 60s रे it was PIOs गुजराती जो माने कि ईस्टर्न अफ्रीका रे थिले. काली जो टर्म ता मु कहथि ट्वाइस माइग्रेंट इंडिया रु ईस्ट अफ्रीका केनिया हला कि उगांडा हला सेठी जाइथिले सेठी पुणी एतर तांको पॉलिसी चेंज हे गेला फेवरेबल हेलानी पुणी से माने जाई कि यूके रे लैंड अप करथिले. 1960s रे मोस्टली से जो माइग्रेंट्स को प्रोफाइल थिला जे से माने मोस्टली गुजरातीस थिले. So by 1990 it was IT professionals, and today largest immigrants the Indian immigrants कथा हमें कहबा सबठु अधिक पंजाबी अछंती यूके रे, and it has various linguistic and religious organizations for Indians. Then you will see that Indian women have higher unemployment rates because when they go as homemakers, tankar employment rate अधिका न थाए. Percentage of Indian women in part-time sector is high. Full-time job रे बेसी न थांती, part-time job रे बेसी थांती. देखिया को मिली छि जे women मानकर part-time sector रे तांका percentage होची 29 constitute only 8%. And the professionals there include doctors, engineers, scientists, academicians, and Indians have a significant presence in their political affairs. जेतु एते वर्ष हैला से माने रहिलेनी as a dominant community तांकर political affairs रे भी से रही छि. Then we will come to take up the case of North America.
North America continent रे केतेटा country अछि? Can someone please respond? केतेटा country अछि North America रे? दिटा अछि ना कोण कोण? सॉरी तीनटा कोटा कोटा अमेरिका कनाडा एंड ब्राजील Brazil, सॉरी Mexico. Mexico, yeah. So you know there is a categorical problem here. आमे तेरा नॉर्थ अमेरिका कहूछु नॉर्थ अमेरिका आमे जियोग्राफिकली कहूछु ताहले आमे कहबा कि जे अमेरिका तो as you pointed out अमेरिका अछि कनाडा अछि मेक्सिको अछि जति आमे ताकू कहूछे डेवलपमेंट डिस्कोर्स रे नॉर्थ आउ साउथ ए टर्मटा अलगा माने गोटे अलगा कनोटेशंस थाए सेटा को गोटे आमे डेवलपमेंट डिस्कोर्स रे रिच माने गोटे एडवांस्ड वर्सेस अंडर डेवलप्ड सेंस रे नो सेठी आउ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ नाही तेनु दैट इज द रीजन आमे तरे एठी नॉर्थ अमेरिका कथा कहूचे वी हैव एक्सक्लूडेड मेक्सिको we have taken America and Canada. And here you will see that we all know school level history रे आमे समस्ते पढ़िथिले जे कोलंबस discovered America. एटा को आमे न्यू लैंड न्यू फाउंड लैंड भी कुहा जाउथिला न्यू वर्ल्ड भी कुहा जाए कोलंबस सेतबेलकू इंडिया एंड चाइना को रूट्स खोजुथिले he was trying to reach India and China. But the reason is you will see that India and China, the roots were already there. Locals, eastern endra asudile. But he was trying to take up a western expedition. You know, se bahut kuha koi kariki Queen of Spain को convince करथिले जे I will take up a western expedition कारण पृथ्वीटा गोल. By this time it has been discovered that the earth is spherical. तेणु मुझे एमती बुल्ली की जीवी मु बेसी जल्दी पहुंची जीवी and he was mistaken actually but that was his perception and the reason से जो already जो existing roots थिला से काहे की जो नबा को चाहू नथले because there were certain enemy nations से माने problem create करी थांते तेणु से सेही बाटे न जाई कि से कहतले मु आराम से सेफली टा भी अल्प पड़िबो मु एई बाटे पळेबी and in the process he actually discovered America thinking that it is India. So that it is jemti aguru mu कहली term North America ta geographical context रे नुहे एटा non geographical sense रे तेनो we did not include Mexico and so madam गोटे क्वेश्चन हां मैडम ये जो माने कोलंबस ता से इंडिया को आविष्कार करिया पई ही से रूट नहीं थिले हां किंतु इंडिया को फाइनली यस अमेरिका हां इंडिया को रूट ऑलरेडी थिला किंतु तांकु लागिला कि जे एठी से जो बाइजेंटाइन ये किछटा देश थिले जो माने कि माने सेही बाटे जेतले जीबी से माने टिके प्रॉब्लम क्रिएट करिवे दे वर हॉस्टाइल तेनु से कहले कि जेटा तो पाख पड़िबो अर्थ ता जति स्फेरिकल गोल हैला मु तो साय कि ना एमति पसी कि मु पूरा चाइना बाटा पहुंची जीबी मु काहे कि तांको संगे युद्ध लड़ीबी एते कथा करी कि अफ्रीका देई कि इंडिया को जीबी तेनु से कन्विंस करके से सेतल को गोटे मैप नाही ना you don't have any sense of geography तम सेतल को मैप नाही किछि नाही तम जस्ट गोटे इंट्यूशन रे से भाबु छंती जे यूरोप परे एमति पूरा बुली गले मु चाइना पाखा पाखी पहुंची जीबी बट सेठी किछि आ लैंड मासेस अछि ताकर आईडिया नथिला ओके so here you will see that Columbus actually mainland North America रे केबे पाद देई नथिले से वेस्ट इंडीज जोटा कि मोस्टली से वेस्ट इंडीज हमें काहे की कहिलु तमे जति जियोग्राफिकली देखिबो वेस्ट इंडीज ता इंडिया रा को साइड रे पडुची ईस्ट रे पडुची टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट किंतु ता नाम है वेस्ट इंडीज देइचे बिकॉज़ से भाबी छंती जे सेटा इंडिया रो वेस्ट रे माने नॉर्थ अमेरिका टाकू से इंडिया भाबी छंती आ इंडिया रो वेस्ट रे सेटा को से पडिबो बोली ताकू वेस्ट इंडीज कहिसंती बट गोटे मिस्टेकन आइडेंटिटी ताको थिला से ताको गोटे न्यू वर्ल्ड ना देई छंती आज सच जदि तमे देखिबो जे इंडिया संगे रे अमेरिका रो सेमति किछि कनेक्शंस नथिला देयर वाज एब्सोल्युटली नो कनेक्टिविटी आमे सपोज यूके संगे जडित है कि अछु बिकॉज़ देयर इज अ कनेक्टिविटी थ्रू colonialism किंतु अमेरिका संगे वी नेवर हैड एनी कनेक्टिविटी सो इट इज जस्ट द स्टोरी ऑफ कोलंबस that has actually created an imaginary world of India being connected because से India को खोजी खोजी आस्थिले तेनु किछि ओटे इंडियन नेस सेठी थिबो
किछि गोटे इंडिया भलिया दिसुथुबो, and that is how it was discovered. And now we will take up the case of Canada, which is again a part of North America, and how actually Indians work and what is the profile of these Indian migrants in Canada. We will try to have a look at that. तमे देखिथिबो जे माने Canada, America, Britain, Australia, these are very popular among Indians even today. It's considered to be a land of opportunity. समस्ते आमे वीजा पाया को चेष्टा करो कि अच्छा किछि दिन सेटल हे जिवु, किछि परमानेंट रेसिडेंसी पाई जिवु. That has always been a dream. You will see that Canada has the second largest population of India after the Chinese. सबुठु अधिका Chinese. तापरे second largest population Indians करो. And Canada is the world's second most population of foreign borns after Australia. तार निजर indigenous population अधिका अपेक्षा माने foreign born you will find it has the maximum population of migrants actually. And most of the immigrants who arrived in Canada, they belong to the age group of 24 to 64. So, although the major community which is extremely dominant in Canada, they are the Punjabis, especially the Sikhs. But there are also other existing communities, and you will see that Canada has a strong transnational link with Punjab. Mane gote mini Punjab exist kore Canada re. It's like the second Punjab, and Punjab can be the second Canada. Seta he paribone, kintu Canada can be the second Punjab. That is, it's extremely popular among the Punjabis, especially the Punjabi Sikhs. Punjab ru mane kehi निश्चय गोटे family ru Canada re settle thibe. So there you will find that there is a narrow regional religious bias in the composition of Indo-Canadian diaspora. Non-Sikh कि जो माने पंजाबी नुहंती से माने ए जो इंडियन डायस्पोरा रे से माने करते विश्वास नाही. तांकर गोटे पंजाबी डायस्पोरा कम्युनिटी टा एते स्ट्रांग जे से माने आ भाबंती नि कि जे जो अन्य इंडियंस जो माने अछंती दे कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. And then जेहेतु पंजाबी कम्युनिटी टा बहुत डोमिनेंट हेची सेठी से दे आर डूइंग वेल बिजनेस वाइज, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेल ऑफ, से माने इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी हेबे हे सरलेनी. ब्यूरोक्रेसी रे तमे पॉलिटिक्स रे तांको बहुत पाइबो, तांको भलो पोजीशन रे. तेनो दे स्टार्टेड ए फुल फ्लेजेड what you say pressure group to have a high commission in Chandigarh for Punjabis कि so that तांको किछि पेपर हैसल्स करा है परियो गोटे चंडीगढ़ रे जेमति गोटे ऑफिस खोलु इमिग्रेशन पे पंजाबी माने जेमति इजीली अप्लाई करिकि कनाडा आसी परिबे. That was the latest demand. And Punjabis they constitute 80% of the immigration applicants. जेते कि भी इंडियंस अछन्ती ता भितर 80% पंजाबी अछन्ती कनाडा रे. That's the reason मो कहली जे सेटा सेकंड मिनी पंजाब. Now I will just try to have a look at some of the what you say uh, categories, some of the categories of migrants. केते प्रकार डायस्पोरा हे पारे कनाडा रे. आमे जस्ट गोटे ब्रीफली गोटे तार प्रोफाइल टा डिस्कस करले. You will see that normally कहली कि it's a very what you say गोटे डाइवर्स ग्रुप माने इंडियन डायस्पोरा कहले कनाडा रे सेटा गोटे होमोजेनियस कैटेगरी होनी. तांका भितरे बहुत प्रकार रही छंती. कोन से माने ना फर्स्ट होचंती रेफ्यूजी क्लास. रेफ्यूजी क्लास को माने ना तमे देखिथिबो जे इंडिया रे पंजाब रे 1980s बळे बहुत डिस्टरबेंस होथिला. खालिस्तान मिलिटेंसी को नै कि जेतरे सिक्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलीथिला. इफ यू कैन जस्ट तमे यदि गूगल करिवो तमे देखिबो कि जे बहुत डिसरप्शंस हेतला. आ पंजाब रो यूथ माने दे वर इनटू मिलिटेंसी. जो प्रॉब्लम ता तमे बे कश्मीर रे देखुछो. That was the case of Punjab in the 80s. And same time re, in order to avoid it, the trouble that was going on here, बहुत लोग सेठी जाइके migrate कर जाइथे. So mid 80s re you will see that Punjabi troubles were at its height, and mostly Vancouver re you will find 15 to 20% of Indian immigrants who were illegal migrants.
illegally गोटे refugee class है कि से आप कोठी पाठ पाई नांती अच्छा कोठी कि suppose फसिया को चाहूची कि पुलिस ये करिया को चाहूची कि you know सही जो it was a product of that movement for various reasons से जो खालिस्तान सिख separatist movement टाइम रे बहुत सिख youths माने सेठी जाई कि illegally migrate कर जाई So mainly you will find Sikh youths who were established in the Sikh Punjabi Canadian diaspora and it caused some tension especially because which could contradiction illa say community bhitere and the government was also aware of it. You know that was one case of refugee. Okay, refugee migrants भी थिले. India एटा खाली मो Indians कथा कहूची. Indian migrant कथा कहूची जार कि 80% होचोदी खाली Punjabis. Then you talk about the skilled workers. Skilled workers को माने ना they were the category that contains those immigrants selected through point system of the 1967 रे ଗୋଟେ immigration policy ଆସିଲା से policy रे से किछिटा point देखाନ୍ତି से point रे जे अधिका स्कोर करिवो से सेटा जाई परियो माने तमर जते point आसिला तमे सेति की अधिका skillful तमर skill अछि तेनो तमे जाई परियो So by the late 1960s and early 70s कौन हैला ना immigration policy change हैला and it reflected in the increase in the number of skilled Indian immigrants. Both Indian जो immigrants जो माने skilled थे, बहुत प्रकार skills तांका पाख थिला, they could migrate. And एठी again पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ये सब जगह बहुत लोग जाइथिले. And it is estimated that 30% of them have jobs in professional and managerial positions, both within government, private sector, and 23% in manufacturing sector. So they were all doing well. अगले immigrants कथा में from India को से present generation रो mostly तमे देखिबो you know students माने जाउछंती Canada रे किछटा बहुत भलो universities अछि technical education पे computer science medicine engineering basic sciences से सब पढ़िया को जानती Chinese Indian community sorry Chinese Canadian community and Indo Canadians एमानक भितर एजुकेशनल फील्ड रे बहुत कंपटीशन थाए and तमे देखिबो जे माने there is always you know the community has more non matriculates than other immigrant groups which is partly explained by family sponsorship bias of Indian immigration to Canada usually gote family sponsors करथांती सेते से माने आसी परथांती and presently Indian immigrant community रे कोन होची ना you will find two categories जो माने बहुत highly educated and professional individualized आउ सेकंड होचंदी जो माने 5th क्लास पद भी पाठ पढिथिबे पूरा अनस्किल्ड तेनु एबे पूरा दी प्रकार तमे स्किल्ड लेबर देखिबो एजुकेशनली हाई जो माने लो नॉन मैट्रिकुलेट जंती कोइ से माने काहे की गले ना अच्छा एडी किछि काम नाही वो किछि करूनी बाबा मा कहले हां कनाडा पठे दा सेडी किछि चाहे गाड़ी फंडी टैक्स टैक्स चलो कि को करबो कि ये करबो से गोटे होप रे पठे दै जानती तेनु जोटी फैमिली स्पॉन्सर करथा ये करथा सेटा भी गोटे कैटेगरी business class. Business class is again another category of skilled professionals. एठी तमे देखिबो जे इंडियन कम्युनिटी जो भी देश रे जो भी कंटिनेंट रे बिजनेस एंटर करछि they have done actually very well. And Canada's business category includes self-employed achanti, entrepreneurs achanti, investors achanti, and normally देखा जाए कि it is a statistics देजी देखो entrepreneurs are expected to have a net worth of excess of at least 3 lakhs Canadian dollar माने तमे जदी गोटे net worth तमरो 3 lakhs Canadian dollar थारो अधिक आसुची ताहले and investors need to invest a minimum of 4 lakhs Canadian dollar तेनु एते की जदी इन्वेस्ट करि पारि ताहले तमे कनाडा रे बिजनेस गोटे करि पारिबो तेनु एठी जे बहुत हाई कैपिटल दरकार थाए ए माने ए जो बिजनेस क्लास रे कंसीडर के अमाउंट माने नंबर ऑफ इंडियंस टिके लेस थांती Then there is this family class. Family class कौन है ना
despite an increase in skilled and professional class immigration, you will see that family class represents almost half of all Indian migration to Canada. को बाटरे तमे आसी पारिबो कैनेडा रे डायस्पोरा रे तमे देखिबो जे कम्युनिटी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल थाए एंड सबुठु अधिक लार्जेस्ट सोर्स होची फैमिली क्लास मोर के रिलेटिव अछंती दे आर ऑलरेडी एमिग्रेटेड कि मोर को चिन्हा परिचय मोर हस्बैंड अछि कि मोर कोठी डिपेंडेंस हे कि मु जाई परिबी किन नॉर्मली फैमिली माने गोटे लोक जाइथिबो किंतु से 10टा 7टा लोक को नै जाइथिबो एज अ फैमिली सेटा भी हे परिबो तो फैमिली क्लास इमिग्रेशन इंक्लूड्स स्पाउस हे पारे तम फियांसे हे पारे तम पेरेंट्स हे पारे तम ग्रैंड पेरेंट्स हे पारे चिल्ड्रन हे पारे अडॉप्टेड किबा ऑर्फन children भी पारिबे निजर भी पारिबे so within the family category largest number of immigrants are spouses and parents जे जीवो सेटा spouse the parents grandparents एमति नेला को गोटे लोको बहुत लोको को नै जाई पारिबो so family class largest immigration as far as Indian diaspora is concerned अब गोटे जिनस देखो तमे जे unlike the PIOs जेटा हम तुमको लास्ट क्लास कहउतली जे PIOs पड़े कोन हेतला माने they were actually the people of Indian origin जो माने कि first wave of diaspora रे जाइथिले if you remember I was talking about the indentured labor who had already migrated to these plantation sites किंतु जति कनाडा यूके एई सब कथा कहूचे एठी it was the migration was among the professionals it was among the educated or non plantation category of labor if somebody has put on the microphone could you please mute it if at all you have to ask any question if not please mute your microphone I think who is it Chinmay Sekhar Sahu could you please mute your microphone okay so here you will see that since these are the recent migrants माने नुआ नुआ migrate करके जाई छथि because तमे Canadian history देखो mostly 60s परठु migration chain ता आरंभ होई छी so for them family is very important जो माने POIs थिले तांकर पूरा connection भांगी जाईथिला they were completely माने they were segregated from their families there was absolutely no connection with them could you please mute your microphone, Chinmay Sekhar Sahu? Are you there? So what I'm trying to say कि family टा जेहेतु माने recently migrate करछथि as a generation याको पे family टा बहुत important and they are still connected तेनो Canadian diaspora जो माने Indians अछंती Canada रे they always have this practice of arranged marriages family networking घरे झियो खोजी देबे तेनो usually पुओ जदी बाहर अछि they will find the girl and the girl will join and that is the reason they are also economically motivated and you will see that they have large proportion of dependents in the Indo-Canadian population they get too many dependents with them and we'll just try to have a look at the Canadian policies जति policies तमे देखिबो जे it has drastically changed over the years Canada रे in 1904 Indian settled जो माने कि माने एग्रीकल्चरल लेबरर थिले ब्रिटिश कोलंबिया रे कनाडा कंप्लीटली बैन कर देथिला इंडियन इमिग्रेशन माने इंडियंस आर नॉट अलाउड इनटू कनाडा टिल 1947 कोनोसी इंडियन आसी परिबेनी बिकॉज़ गोटे बहुत रेशियल बायस थिला कनाडा बट वर्ल्ड वॉर परे things started changing.
family immigration hela from non-European countries because loko darkar restoration work pe. Mostly it was Indians and to be more specific it was Punjabi. सबुठ इंटरेस्टिंग कथा पंजाब रो गोटे डबा रीजन अछि सेटा गोटे एग्रीकल्चरल एरिया जोथले कि मोस्टली एग्रीकल्चरलिस्ट थांती सेटू सबुठ से गोटे एरिया रू समस्त माइग्रेट हेकि जाइथिले तमे देखिबो that is the most interesting thing about this Canadian diaspora then sorry yeah um, So, as I told you, 1967 was the landmark period for Canadian diaspora. 1967 में कौन हेतला ना the immigration policy based on race, ethnicity, nationality was lifted. The पूर्वरु Canadians they were very they had this practice of racial discrimination. They used to allow only whites. 1967 ପରେ ସେମାନେ ଆଉ race ଆଉ ethnicity nationality ଏମିତି ban କରେନ୍ତି straight କହିଦଉଥିଲେ no Indians are allowed କେହି Indian ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଫେରେଇ ଦେବେ ଯଦି Indian ଥିବେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବେନି କିନ୍ତୁ 67 ପରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଉ ମେରିଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ रेस देखिलेनी कलर देखिलेनी nationality के को देशरु आछि सेटा देखिलेनी जहार क्वालिफिकेशन अछि जहार मेरिट अछि से कनाडा भितर को एंटर करि परिबो So by 1971, immigrants came from all parts of India and POIs flocked from Hong Kong. जो माने Hong Kong रे थिले 71 रे, Fiji रे थिले, East Africa रे थिले, क्वाड जिबे जानि पर नथिले, सिचुएशन खराब हे जाउतला, Trinidad रे थिले, समस्त सेटु they all started applying for Canadian for Canadian immigration. So 1976 रे गोटे immigration act आसिला and this act actually administered certain fair immigration practices. से refugees को भी allow कला से steps नेला जे अच्छा जनकर फैमिली आउट रह जाइछि से किंतु पड़ी आछि किंतु फैमिली को आनी परनी तेनु फैमिली रियूनिफिकेशन पे भी से तार लॉस जाको सब पुनी माने स्लैक कर देला सपोज मेरिट और क्वालिफिकेशन देखुछि सपोज मोर मेरिट अछि मोर हस्बैंड र नाही तेनु मते ऑलरेडी दे देइ छंती अलाउ कर देइ छंती मोर हस्बैंड की मो वाइफ आसी पारुनी सो फैमिली रियूनिफिकेशन पे से स्टेप ता नेतिला and this has actually led to many fraud practices से जो ए जो स्टेप ता नेला बहुत फ्रॉड प्रैक्टिसेस हेतला तमे देखिबो जे पंजाब रिसेंट रे नॉर्मली मीडिया रे भी बहुत आसे you have even stories and soaps coming up on this theme कि से माने फ्रॉड मैरिजेस करंती आसी कि बाहाय जिबे जे हां कनाडा रे हमें नबो किंतु सेटा ऑलरेडी प्री प्लान थिबो जे वंस तमे बाहाय कि पळैला परे you will get a divorce because थरे तमे once you are married means you will get entry into Canada you will get its citizenship so that is the reason ए जो 1976 इमिग्रेंट एक्ट आसिला परे बहुत मैल प्रैक्टिसेस आरंभ हो गया then Canada basically Indo-Canadians they are popular globally for certain for their dance troops there are so many dance troops that goes very strong culturally देखिबो these are the things and then religious wise जेतु 80% are Punjabis and mostly Sikhs you will find gurudwaras all across Canada चारियाडे गुरुद्वारा थिबो you will feel as if you are in Punjab and then so there was this Canadian government agencies like Heritage Canada, International Development Agency, CIDA. They fund religious and cultural activities. जो government रो organization उड़ाको agencies उड़ाको, किंतु Indians जो माने कि जो Indian diaspora Canada रे अच्छन्ति, PIOs हो कि NRIs हो, से मानकर cultural activity पे the government funds them. Then there is this Lal Bahadur Shastri Foundation, which has an excellent contribution for facilitating interaction between academic communities. Dita university भितरे कि जहाँ dita देश भितरे कि चिटा dialogue आरंभ करिया पे इटा facilitate करे among the Indian diaspora.
Then we will talk about America. After Canada, it's America. Uh, again, you know, it has a very large number of educated and professionally qualified Indians. I'm समझते जानिए. But like rest of the developed advanced countries, it Europe हो कि Canada हो, sorry Britain हो, Canada हो, America was also equally biased racially. माने President Wilson, he actually never wanted Indians or Chinese to enter India. ସେ ଗୋଟେ literacy test ରଖିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ବେଶୀ କହିପାରିବେନି ଇଂଲିଶ ଭଲ କହିପାରିବେନି ଇଏ କରିପାରିବେନି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଚାଇନିଜ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟର ନ କରନ୍ତି and it was during that time most immigrants Indians were not highly qualified ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆମର education level କେତେ ଥିଲା before independence we were just a part of the indentured labor. I mean, say labor, here manual labor group रे जाउथले. Even after independence, तमे यदि 5 year plans का को देखिबो, I think if I'm not wrong, exactly मने नहीं, but our literacy rate around 12% to 13% थिबो by the time India attained independence. तेनु सेई टाइम रे केते थिबो? तेनु they never wanted Indian and Chinese. And California state the laws were extremely stringent for foreign immigrants. So बहुत प्रकार एमती policies रखते जो थे कि माने पंचवाटा भारी कष्ट है जीवन के foreign immigrants में. But after 1917 the Bayard Jones they included India and 1921 रे कौन था ना किसी का कोटा से माने allowed करे. कि अच्छा इंडिया रो हमें हो 10टा कि 15टा या ठरो अधिका वर्ष को आसी परिबे. किछटा धीरे धीरे किछटा ये कले ताकि से माने बहुत देखा चाहा करी कि नेबे 1965 रो एक लैंडमार्क डिसीजन हैला जेमति कनाडा रो आई थिंक 67 रे कनाडियन इमिग्रेशन एक्ट थिला सेमति 65 रे भी यूएस रे हैला जोटा कि इंडियन इमिग्रेंट्स मानु को एंटर करिया को अलाउ कला ता पूर्व अमेरिका जमा टिल 65 अलाउ ही करूनथिला earlier 1946 had ended 30 years of exclusion for Indians by allowing hundreds as quota. 46 रे कोन हिता ना 100 जन को देखि जाहि कि से अलाउ करथिला किंतु 65 रे से किछ आवश्यकता रखिलानी से जहा को माने ओपन कर देला क्राइटेरिया जहा रखिला इट वाज ओपन फॉर ऑल then you will see that there were two reasons हठात से काहे कि 47 रे अलाउ कला जे कि जमा माने इंडियंस को ना रे से जमा सुनु नथिला कि पूरा स्ट्रिक्टली से प्रोहिबिट कर देथिला प्रथम कथा सेई टाइम रे से ऑलरेडी चाइनीज मान को एंट्री दबा आरंभ करथिला ते इंडिया को देला एंड सेकंड टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर जस्ट सॉरी आसुथिला एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम रे कोन हेछा ना किछटा अमेरिकन ट्रूप्स इंडिया रे जो माने स्टेशन थिले ताकर गोटे antagonism गोटे हॉस्टिलिटी बढ़ुतला इंडियन ट्रूप्स मानकर अमेरिकन ट्रूप्स प्रति किछटा सिचुएशन ता खराब हे जाउला जेंति तमे बे बॉर्डर रे रिसेंटली हमें देखले चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स को भीतर टिके हाथा पाई हे जाउची सेई टाइप रो किछ कॉन्फ्लिक्ट हैला एंड दैट इज द रीजन in order to ameliorate the situation they started inviting Indians. Then 1965 रो जो amendment act है it opened the gates for knowledge workers in America. जो माने knowledge अच्छी knowledge माने कोई in terms of professional जो माने से मानो को से पूरा allow करता है. And then you will see that in 1970s US was the most sought after destination. माने जीपी जदि पड़े जीपी अमेरिका जीपी ब्रिटेन जीपी कनाडा जीपी ऑस्ट्रेलिया जीपी एबे भी we have the same dreams. I don't think you will still say कि नहीं मैं अफ्रीका जीपी कि मैं नेपाल जीपी no we don't. तेनु फेवरेट डेस्टिनेशन इंडियंस मानकर 70s रे हेगला अमेरिका 65 रे से गेट करिला 70s रे everyone wanted to go to America and the reason being immigration nationality amendment act 1970 to slack kala that was the reason everybody wanted
And ए टाइम में कौन होता है ना अर्बन एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मास वे मोस्टली विजिबल जो भी इंडियंस मानन को आपण माने अमेरिका रे देखथिबो ए टाइम रे देखथिबे 70s रे they were all urbanites educated and English speaking so आमे जो फर्स्ट गोटे दिटा क्लास रे we started talking about this phenomena called brain drain जदि आमे देखिबा ब्रेन ड्रेन कांसेप्ट ता ए जो 70s रु आरंभ होची बिकॉज़ प्रायर टू दैट ब्रेन जाउ नथला माइग्रेट हेकी हमर मैनुअल वर्क का जाउथला तेनु कनाडा को अमेरिका को कि यूके को ब्रेन ड्रेन कांसेप्ट ता इट इज अ पोस्ट 60s 70s कांसेप्ट ओके सो हमें ये जो सुनाई थी जो वीजा H1B वीजा विषय that was actually a landmark decision coming up in the 1990s the amendment in the immigration policies where they wanted to bring in human capital and in terms of skills in terms of knowledge अमेरिका रा जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट अछि ताको देखि कि से H1B वीजा टा आरंभ कला H1B वीजा माने हाईली स्किल्ड टेम्पररी वर्कर्स जो माने हाई स्किल H1B वीजा बी वीजा समस्त को मिले बनी तमे एक्सट्रीमली माने तमे तो प्रोफेशनल हेथिबो तमे किछटा स्किल्स थिबो तमे जति कि किछटा आईटी प्रोफेशनल्स को देखिबो से माने H1B वीजा ही जाती तो इट्स अ वेरी माने स्पेशलाइज्ड थिंग बट से वीजा को भी से माने किछटा तार रेस्ट्रिक्शन करथिले एंड तमे देखिबो से रेस्ट्रिक्शन करथिले एंड एट द सेम टाइम पोस्ट 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऊपर जो बॉम्बिंग हैला जो एयर क्रैश हैला तापर गोटे रिवर्स ट्रेंड हैला अमेरिका डरिला कहला ना ना आ के आसीया दरकार नै मोर अदर आई विल अपॉइंट बीपीओस माने बीपीओस रो फुल फॉर्म business processing outlets. For example, I'll give you an example. You will see that I don't know. There is this book on globalization by Thomas Friedman. ये जो बहीटा ना होची world is flat. Why the world is flat? एबे काहे की कुहा जाउची world टा flat बोली आगुर काहे कुहा जाउ नथला बिकॉज़ तमे जदि देखो हमरो कोलंबस को टाइम रो ही कुड वेंचर बिकॉज़ तांको पाखी गोटे नॉलेज आसिला जे वर्ल्ड टा स्फेरिकल माने से आराम से वेस्ट बाटू इंग्लैंड रो चाइना पहुंची जेबे बट इन रिसेंट टाइम्स वी सी दैट द वर्ल्ड इज फ्लैट दैट इज व्हाट फ्रीडमैन हैज सेड वर्ल्ड इज फ्लैट से इथि पे कहउछंती बिकॉज़ इफ यू लुक एट अमेरिका and countries like China and India and especially India अमेरिका को हमें एग्जैक्टली 12 घंटा आगुआ अछि and so it was a massive opportunity for us माने suppose गोटे गोटे बहुत मैजिकल कथा बलिया एटा माने राती रे मोर गोटे कामटे करिवार अछि मु कहबी मते निद लागुची मु सोई पड़िबी तमे मो पे सेटा करके रखि देथिबो मु सकाळ उठिला बेलको मो कामटा आपे आपे हे जाईची मते किछि करिया के पड़लानी सेई भलिया जिंस एडा तमे सपोज देखो ए जो कॉल सेंटर्स गुडा जो माने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स रे काम करूछंती से मानु गोटे गोटे माने इंग्लिशाइज्ड अमेरिकनाइज्ड ना दिया हे जीवो से माने गोटे एक्सेंट रे कहबे गोटे इंग्लिश रो गोटे एक्सेंट रो ट्रेनिंग देबे काहे कि ना तांको क्लाइंट्स माने बेसिकली अमेरिकन्स थिबे अमेरिका राते सकाळ होची हमर राती होची से माने नाइट शिफ्ट रे बहुत जण जानती तमे देखुथबो से माने राते की काम करूछंती हमें भाबुथबा बट द थिंग इज दैट से या तांको सरको दिन हेची दे आर एक्चुअली catering to the clients in America जो माने अनै छंती तले हमर राती हेची तांकर सेमती राती टाइम टर जो कामटा सकाळ उठन को हमें इंडियंस माने तांको काम तयारी करके रखि देइछु that was the beauty of this business processing outlets तेनो अमेरिका कहला 9/11 परे it became very conscious कि कोन हबो it was
it was quite afraid of the terrorist attack, and kahaku visa debi kahaku debini, tenu it became highly, you know, and the visa processing was under immense scrutiny. ମୁଁ ଠିକ ସେ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେବିନି, ମୋର ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଭିସା ବହୁତ ଦେଇ ଦଉଥିଲି, ଏବେ ସେଟାକୁ ପୁରା ସ୍କୁଇଜ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ବିପିଓସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଦରମା ବି କମ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏଠି କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପଇସା ଦେବି, ଗୋଟେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଯଦି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ 70 or 71 rupees today, $1, ତେଣୁ इंडियंस मानू जदि 10,000 भी पकई देबे, 10,000 केते डॉलर हबो, 10,000 डिवाइडेड बाय 70, माने तांकर $100 हे गला को हमर 7,000 टंका हे जाउची, you know, that was very cheap for them. So that's the reason Thomas Friedman has said that the world is flat. माने वर्ल्ड फ्लैट हे गले कोन हबो, दिन राती कांसेप्ट आसुची स्फेरिकल थिले अर्थ बुलुची, तेणु आमर सकाळ हेले अमेरिकार राति होची, फ्लैट माने आ दिन राति कांसेप्ट नाही, तेणु सब बेले काम चलीची, इकोनॉमी इज ऑलवेज ऑन दी गो, इंडिया रे हो कि अमेरिका रे हो काम चलीची, अमेरिकार काम हेई जाउची थ्रू बीपीओस, दैट्स द रीजन ही सेड वर्ल्ड इज फ्लैट। तेणु से जो H1B वीजा दबाटा टिके कमाई देला पोस्ट 9/11, after, you know, there was immense pressure from these industries कि तमे वीजा लिमिट कमाई देले हमर काम केमती हो। एंड रिमेंबर when it comes to technology, especially this IT technology, Indians are completely brilliant, तांको space केही नहीं परिबेनी, and they badly needed these technocrats, and that's the reason H1B visa was reintroduced again, तार लिमिट को पुणी बढ़ा गला। So, you know, there were three major issues which actually affected US immigration policies. One is ethnic balance in population, second is illegal immigration, and third is labor force needs. And when you talk about the entry of knowledge workers, they came with occupation preference, not with occupation preference, but mostly through family preference. माने मोर घरे मोर रिलेटिव अछंती, मो ये अछंती, एठी ऑक्युपेशन न देखि कि वो फैमिली प्रेफरेंस दे कि बेसी चली जाउची, मो पाई जाउची वीजा। एंड देयर इज आल्सो अनदर वे, जो कि नॉर्मली जोटा नॉन इमिग्रेंट वीजा कहंती, मोस्टली स्टूडेंट्स कि मु किछि दिन बुलिया को जाउची वेकेशन पे, प्लेजर ट्रैवल पे जाउची, एटा भी गोटे फॉर्म ऑफ वीजा दिया जाय। So the Indian diaspora that you see in America today is highly educated, they are professionals, they are you know, mostly IITians, and they have come from premier universities, and जब तक employment profile देखियो 95% of the Indians in America are employed, and 5% बधे चाकरी फाकरी खोजुथबे, 95 are employed। And in 1983, you will see that the share of professional and technical immigrants alone amounted to 50% of immigrants in occupation. And dita category ro Indian immigrants thanti, professionals versus technical, ଆଉ ନହେଲେ executive, administrative, managerial post रे, एई दीटा ये रे पोजीशन रे निश्चित हमें Indians को देखियो। So today there are over 1,000 US based organizations of Indians in America, because Indian manakar needs सेतिकी, demand सेतिकी एबे। So you have many cultural organizations, religious organizations all over America. It's more than 1,000 today. Before I proceed further, each doubt clarification kahara darkar? Anyone? No? I will continue. Okay. Yes, ma'am. Please continue. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Now we will come to the other island, Australia. Australia is actually called antipode किबा ताकू से जो एंटायर कंटिनेंट को हमें ऑस्ट्रेलेशिया को, ऑस्ट्रेलिया रे नॉर्मली हमें तीनटा देश देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी। एंड as such इंडिया ऑस्ट्रेलिया रे एते प्री हिस्टोरिक कनेक्शन नाही, किंतु किछटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट अछंती, दोस एंथ्रोपोलॉजिस्ट they believe that
you know, it was a part of the Indian peninsula. तमे यदि ऑस्ट्रेलिया रा शेप देखिबो किछटा भी स्टडीज हेची सेटा पूरा इंडियन पेनिनसुला संगे लैंड मास टा पूरा फिट हेई जिवो तेनो से मन को लागे जे ऑस्ट्रेलिया टा अलगा हे जाई इंडियन पेनिनसुला संगे बट वी डोंट हैव एनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स टिल यूरोपियन सेटलमेंट आरंभ न होला पर्यंत इंडिया रो ऑस्ट्रेलिया सहित कोनोसी रिलेशन नथिला जेमति कि नॉर्मली हमें एंशिएंट टाइम्स रे हमें कहू कि चाइनीज माने आड़े जाइथिले इंडियन माने यूरोप चाइना बिकॉज़ इ लैंड बाउंड देश को हमें जाइथिले बट ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करूची सेठी कि जाई हबो दैट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन वी नेवर थॉट ऑफ इट आउ तमे यदि देखिबो 19th सेंचुरी रे चाइनीज डायस्पोरा बहुत अधिक थिले ऑस्ट्रेलिया में and the first category of Indians who came to Australia they were the indentured labor normally say cultivators है कि plantation site रे काम करिया को Indians माने जाइथिले सेकंड कैटेगरी को माने थिले ना ट्रेडर्स जो माने कि ट्रेडर्स है कि जाइथिले many Indian born in Australia are the children of British military officers because Australia टा भी गोटे ब्रिटिश कॉलोनी थिला ना तेनु सेठी जो मिलिटरी ऑफिसर्स माने थिबे इंडियन ओरिजिन रो कि जो माने सिविल सर्वेंट्स थिले जो सेठी सेटल कर जाय छथि तांको पिला माने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से कि रह जाय छथि सेही प्रकार रो इंडियन डायस्पोरा तमे पाबो आउ गोटे कथा माने तमे देखो you will see that there is a difference तमने नोटिस करथिबो हम केले POIs को कथा कहउथिले POIs got integrated themselves mostly they got integrated with the host society तमे इंडिया रे इंडियन डायस्पोरा कथा को जो माने ट्रिनिडाड रे जाइथिले हम जेतले डिस्कस करथिले शुगर कैन प्लांटेशन रे काम करिया किमा मलेशिया रे थिले किछ मलेशिया रे किछटा असुविधा हैता बट कैरिबियंस रे हला कि किछटा अफ्रीका रे they could actually create a space for themselves किंतु तमे देखो जति कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस अछि they were highly racial तांकर पॉलिसी थिला कोन हमको खाली गोरा लोक दरकार ब्राउन ब्लैक्स पॉसिबल आम कंट्री तेनु ऑस्ट्रेलिया had the same immigration policy and it started with immigration restriction act से केबे जाउ नथला जे नॉन व्हाइट सेटलर्स को के आसी कि ऑस्ट्रेलियंस को संगे बसबास करंतु तेनो 1901 रे से गोटे इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट आरंभ कला and it was followed by Australia to maintain uniformity खाली व्हाइट सेटलर्स रहबे आ से कहा को देखिया को चाहला आ अदर काइंड्स ऑफ एंट्री लॉज भी से बहुत स्ट्रिक्ट रखला इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिक्टेशन टेस्ट तमे केमति उच्चारण करूछ केमति तमे स्पेलिंग टा ठीक लेखुछ कि नै एमति सब परीक्षा करे कि भीतर को छाड़िबो जेतले अति दरकार भी पड़िबो so the number of Indians who could enter were British nationals जो माने कि ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजंस थिले माने को इंडियन बिजनेसमैन जे कि पूरा 19th सेंचुरी रो ब्रिटेन रे सेटल कर जाईची सेही सी ऑस्ट्रेलिया जिबा को चाहूची सेही क्लास रो लोक ताने जाई परिबो आ थर्ड कैटेगरी कोन ना एंग्लो इंडियंस हमें जितने इंडियन डायस्पोरा रो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते कि जे ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इट वाज अ रेयर कम्युनिटी बिकॉज़ दे वर द चिल्ड्रन ऑफ द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की ब्रिटिशर्स माने कॉलोनियल पीरियड टाइम रे ऐतिहासिक थिले इंडियंस मानन को थ्रू तांकर जो चिल्ड्रन हेतला तांको हम एंग्लो इंडियंस कहू किंतु एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ना इंडिया एक्सेप्ट कला ना ब्रिटेन एक्सेप्ट कला इंडियंस माने ब्रिटिशर्स गला परे तांको सबबळे जो राग थिला ब्रिटिशर्स को ऊपर से माने सेही नजर सबबळे तांको देखिले एंड मोस्टली दे वर कंसीडर्ड टू बी इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश तेनु दे वर नेवर एक्सेप्टेड तेनु इंडिया छाडी के से माने ब्रिटेन को मूव करे ब्रिटेन रे गला को स्थिति सेया दे आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड तांको ब्रिटेन रे भी के एक्सेप्ट करलेनी तेनु दे हैड नो अदर वे से माने भाबिले जे हां ऑस्ट्रेलिया इज अ perhaps a better place and since semane tike white thile black ki brown na thile they could enter and mostly they were the twice migrants so twice migrants mane already british citizens achhati se man ko australia allow but it had a very strong racial bias you will see that a brief change in the policy of Australia came in the Migration Act of 1958 they granted permanent settlement to Anglo-Indians. And the first time maybe because Anglo-Indians were white and same मानू खाली जो माने migrants थे से Anglo-Indian migrants को permanent settlement allow कला.
And final closure to racial exclusionary policy came in 1973. तमे देखो 70s को समस्ते द्वारा खोलुछंती लेट 60s चाइना सॉरी कनाडा कला 67 रे अमेरिका कला 65 रे and I think Britain भी कला से around 60 केते रे missing out the number. So Australia आउट के पर 70s रे. So by 70s कहली ना गोटे नीड थिला ग्लोबल नीड कोन ना हमको एबे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स दरकार और 70s बड़ को एजुकेशन इंडिया रो काफी इंप्रूव कर सकला बहुत प्रोफेशनल्स बाहरी पारुथिले मु कहली पा जतरे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस पाइतला 12% जोटी लिटरेसी रेट 12% खाली दस्खत करि परछन प्रोफेशनल केते हिथिबे 40% भी हिथिबे कि नहीं डाउटफुल तो तांको भितरो कि बाहर को गला कि नहीं तेनु तेबे नट अलाउड कि इंडियन माने किए ना हां लेबरर श्रेणी रो लोक के तांको पसुछि तेनु गोटे रेशियल गोटे क्लास बायस सब पड़े ये जो तीनटा मेजर एडवांस्ड कंट्री रो रही आसी छी दैट यू कैन क्लियरली सी एंड जोटा कि मु कहली जे फाइनल racial exclusionary policy it came in 1973 with the induction of the policy of multiculturalism से माने कहले कि नहीं हम गोटे मल्टीकल्चरल अप्रोच रखिबु जोथरे कि ऑल काइंड्स ऑफ कल्चर शुड बी फ्री टू ग्रो बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया रे अस्तित्व कोन अछि ऑस्ट्रेलिया रे बेसिकली it is a land of people from different nationality और निजर किछि सेमति ये अछि कि that is the major reason and here you will see that the racial discrimination act यार exactly open up कला पर आसला 1975 कि nobody can be racially discriminated जोटा कि गोटे तांकर नॉर्म हे जायतिला तमे ब्लैक कि तमे ब्राउन माने they will just not look at your face but that changed after 1975 the legislation came at least gender distribution pattern यदि तमे इंडिया रे देखिबो it was very skewed mostly during the initial periods कारण तमे देखो एते दूर को के को जाऊ को माने जाउथिले mostly the male members जाउथिले and mostly they were you know when immigrants laws changes slowly people started making the connectivity with the homeland तेनो अच्छा झियो दरकार बाहा पे पो दरकार अच्छा इंडिया रे खोजिबा हमें इंडिया सहित ये करिबा तेनो धीरे धीरे जेंडर डिस्ट्रिक्ट एंड एटा बेसिकली हेछि सिख कम्युनिटी जोटा कि से माने ऑस्ट्रेलिया रे भी डोमिनेंट लाइक कनाडा तेनो सेठी कोन हैला ना तमे देखिबो कि जे मोर एंड मोर वुमेन स्टार्टेड जॉइनिंग ता पूर्वरो इट वाज बेसिकली ए मेल मेंबर कम्युनिटी बिकॉज़ एते तार स्ट्रिक्ट थिला बिफोर 70s का पॉलिसी जो माने भी रहउतले ए टाइप रो लोक कि एलिट श्रेणी रो लोक नले के जाई पन and today Indian diasporic territories they are doing quite well तमे जदि देखिबो मोस्टली दे आर लोकेटेड इन अर्बन साइट्स ऑफ सिडनी हला मेलबोर्न हला पर्थ हला जति कि सब सिटीज रे से माने बेसी रहउछंती तमे जदि अन्य पीआईओ साइड कंपेयर करिवो से माने ट्रैवल करथिले agricultural sites but एठी आजिका प्रोफेशनल इंडियंस they are located in the core of the city and I mean देखियो the Indians का profile we try to look at the profile of the Indians in Australia how well they are doing okay and here I will you will see that Indians who were emigrated were plantation workers जो माने पूरा indentured labor time रे जाइथिले से माने सिडनी पर्थ किबा मेलबोर्न रे जाई कि कैनबरा रे जाई कि सेटल करना से माने विक्टोरिया रो क्वींसलैंड रो रूरल एरियाज रे टाउनशिप मेन सिटी रो भी नहीं next generation thila the generation of taxi drivers even taxi drivers they still have a very good reputation because बहुत प्रोफेशनल्स तमे देखिबो जे आईटी प्रोफेशनल्स से माने पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइविंग करथि बिकॉज़ इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब टैक्सीज आर वेरी रियली एक्सपेंसिव इन ऑस्ट्रेलिया and and you remember and if you travel तमे दे तांक से टैक्सी ड्राइवर्स को संगे ऑस्ट्रेलिया रे कथा हबो they will be very well educated से के कहबो कि जे हां मो इंजीनियर बाय प्रोफेशन आ मो आज ऑफ डे अछि सैटरडे अछि से टिके टैक्सी ड्राइविंग कर दोछि घंटा 2 घंटा टैक्सी चलेले भी इट्स इनफ होता है so it's a very lucrative thing always then railway guards store जो माने कि दुकान खोलुतले रेस्टोरेंट ओनर्स ए कैटेगरी के सेकंड जनरेशन ऑफ माइग्रेंट्स कॉले
The new generation workers were skilled professionals like doctors, engineers, and academicians. And about 10% of the diasporic community of India fall under high income category. And Australia, doctors are like the most richest there. ମାନେ they have all kinds of ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ posh area ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ suppose मुंबई रो आमे कहबा कि कोलाबा एरिया जोथरे कि खाली फिल्म स्टार रहबे तमे जे ऑस्ट्रेलिया रे सेमति posh sites किछटा देखिबो you will see that it has been owned by mostly doctors and other professionals. So 10% of the diasporic community जो माने कि very high income से माने इंडियन कम्युनिटी रे जो हाई प्रोफेशनल कैटेगरी को बिलोंग करते. Talking about the different waves of migration ଏବେ जो କଥା ଆମେ କହିले कि जे बहुत गोटे स्टेज ଦେଇକି ऑस्ट्रेलिया रे माइग्रेशन ହେଇଛି जदि बा से रेस्ट्रिक्ट କରିଛି इंडियंस मानकु स्टिल माइग्रेशन ହେଇଛି. ओल्ड माइग्रेंट्स जो माने कि इंडेंचर्ड लेबर टाइम रे जाइଥିଲେ, न्यू माइग्रेंट्स, geographically indirect Indian migrants, second generation Australian born migrants. Indian, sorry. Well, old migrants को माने रिमेंबर इंडेंचर्ड लेबर टाइम रे से छोटा नागपुर प्लाट्यू रु जो ट्राइबल्स जाउथले कि जो हिंदूस मान को निया जाइथिला गैंजेटिक प्लेन्स रु किबा साउथ. बट इंटरेस्टिंगली तांकर के वंशधर आउ ट्रेस करी होनी एबे as if these people never existed. Kuade हठात disappear कर देले and they have not left behind any trace. छुआ पिला तांको lineage किछि जणा पड़ोनी. They don't have any idea कि जणा नाही कोन हेछि तांको सहित. They don't exist today. Second हेतला 1890 रे गोटे ग्रुप ऑफ 406 आ पंजाबी मुस्लिम्स were taken. तमे ऑस्ट्रेलिया is a site जो is a site for gold mines. I think there is this place gold coast. सेठी आगुरो गोल्ड माइनिंग होतला. तेनो जो गोल्ड फील्ड्स रे काम करिया पे 400 टा पंजाबी निया जाइता. तांको भितर 6 थिले आ मुस्लिम्स भी थिले. सेही मानकर किछि सर्वाइवर्स एबे अछि. So they still exist. They were the second wave of migrants. तापरे आसिले न्यू माइग्रेंट्स को माने जो माने ट्वाइस माइग्रेंट्स थे ऑलरेडी तमे देखो किछटा ये है कि बर्मा रे ऑलरेडी ब्रिटिश टाइम रे माइग्रेट करि सकथिले. सिंगापुर रे मलेशिया रे ऑलरेडी एस्टैब्लिश सेठी से माने ऑस्ट्रेलिया जाय छै. सपोज बर्मा रे सिंगापुर रे मलेशिया रे पॉलिसीज फॉर इंडियन से भलो नथिला गवर्नमेंट पॉलिसीज सेठी से माने सेठी पुनी माइग्रेट करते छै जेहेतु तांको पाखि ओटे ऑलरेडी कोन कहबो ब्रिटिश नेशनल nationality अच्छी कि आउ कोन अच्छी से पे दैट्स द रीजन से माने करि पाछन. ओल्डर इमिग्रेंट्स पर तमे देखिबो जे से माने ताकर एथनिसिटी मेंटेन करछन्ती किंतु जो माने नुआ जाय छै सपोज जो सेकंड जनरेशन जो माने को पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया रे जाय कि इंडियंस माने सेटल करथिले आ से पिला माने सेठी जन्म होय छन्ती. They try to mingle their identity completely with the Australians. Older migrants तमे एबे देखिबो जे they are located in the semi-urban agricultural region जोटा कि Cots Harbour हैला, बुलबुला हैला. When we are talking about cities like Sydney or Perth or Melbourne, you will mostly find the new migrants there. Then Hindi is actually the basis of bond among different categories of Indian diaspora. तमे Hindi speaking world रे था न था, but Hindi cinema, Hindi music, it has always bound them together. And Indian cuisine is extremely popular. There are a number of Indian restaurants, and it's equally well liked by the whites also. There is a strange kind of relationship between Indo-Fijian. They form another section and they maintain their own cultural identity. Indo-Fijian कहबेनी जे हमें Indo-Australian संगे समान. And से माने कहबे कि जे हम होमलैंड फिजी. हमें फिजी सहित एसोसिएट करंती. इंटरेस्टिंग ଗୋଟେ एग्जांपल इट तम टेक्स्ट रे अछि टेक्स्ट रे. ଗୋଟେ फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन हैला 2000 बट
you know, simultaneously ସେମାନେ Fiji Indian Social Cultural Association भी ଅଛି. You know, Fiji Indians and Australian Indians, they think that they're different ethnically. Sorry. And then you will see that Fiji, they don't allow regional Indian language much, but they have this religious following. So माने एतटा माने Fiji रे भी तो बहुत मल्टी एथनिक इंडियंस जाइछन्ति कि पंजाब रु जाइथिबो कि गुजरात रु जाइथिबो, किंतु तांकर से जो रीजन सहित एते कनेक्टिविटी नाही. तांकर हिंदी सहित से मैंने आइडेंटिफाई करछुदी थ्रू सॉन्ग्स एंड ऑल, बट नॉट दोस रीजनल लैंग्वेजेस. बट हां, रिलीजियस फॉलोइंग इज स्टिल देयर. And for him, Fiji case तक और ଟିକେ intricately and पढ़िबा बे, I will take up the material and I will discuss certain things. For Indo-Fijian, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତାଙ୍କ homeland ଟା Fiji rather than India. ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ migrate କରିଛନ୍ତି. They don't have maybe ସେ collective memory ଟା maintained ହେଇନି कि there is some problem. So there are few riots or, you know, attacks against Indians, and but still you will find that to some extent or to a large extent, Indians have actually integrated themselves quite well with what you say, the Australian community, with the social fabric of Australia. Now I will take up the case of Indians in New Zealand. तमे देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ए तीनटा देश को लेकी ऑस्ट्रेलेशिया आइलैंड ता हेछि. बट स्टिल तमे सेथरे किछि किछि नुआंसेस पाइबो. न्यूजीलैंड has two main islands, one north island or south island अछि. It is completely, it's an island, it's surrounded by the sea, and 1810 रे it was first noted. And एठी जो माइग्रेशन का तीनटा स्ट्रीम रही अछि. फर्स्ट है इंडेंचर्ड लेबर फेज, जोटा कि 1810 टू 1900 चलिला. सेकंड टा गोटे इंटरिम पीरियड हैला. आउ थर्ड जोटा कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी को पर्यंत गला. एंड थर्ड टा हैला आफ्टर द फर्स्ट हाफ, माने से एका ट्रेंड इंडेंचर्ड लेबर, तापरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर्यंत बहुत अल्प पूरा रेस्ट्रिक्शन, तापरे सेकंड वर्ल्ड वॉर पर तर डिमांड बढ़ुची कामरो, सेतले पुनी से माने अलाउ करछन. तेणु तमे देख, ये जो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भीतर जति देश अच्छी सेम पैटर्न ऑफ माइग्रेशन फॉलो करछन्ती, माने as far as opening their doors to the Indians are concerned. And the first recorded indentured labor migration to the Antipodes was in 1840 in New Zealand, and it was followed by indentured labor in the plantations, and it amounted to only 46 in 1896. They were hawkers, peddlers, domestic workers. ए फॉर्म रे भी बहुत लोग जाइछन्ती. न्यूजीलैंड पर बहुत रेस्ट्रिक्शन थिला टू नॉन ब्रिटिश पीपल. यू कैन रीड इट एज नॉन व्हाइट, माने जो माने व्हाइट नोंती, ब्लैक ब्राउन्स लाइक अस, they were not allowed. And it reformulated its official immigration policy in 1899. Immigration Restriction Act कौन कहला ना, provision of non-British and non-white immigrants to write and sign application form in an European language. तमे कौन सी यूरोपियन लैंग्वेज रे लिखिया को पड़िबो, तो जो माने नॉन ब्रिटिश किबा नॉन व्हाइट. तेरो नेचुरली से टाइम रे 1890s रे काहा को इंग्लिश जଣା थिबो कि तेटा लोगों को इंडिया है. So that was, you know, a policy for restricting Indians. Interestingly, the immigration policy allowing non-white settlers in New Zealand changed only in 1986. And तब देखो, it took 87 years से जो racially biased immigration policy मात्र 1986 रे बे recently change ହେଇଛି. 86 पूर्वରୁ भी तमे जिबाକୁ चाହିଁଥିଲେ भी जाई पारनथांता. That is the case. So here you will see that it has still created some space for the Indian diaspora, and here you will see that the second wave to immigration है ना, first half of 20th century, see it actually, you know, it was mostly this category of Indians. Indian जो माने born है छंती, direct born in India, से माने मात्र just 13,000 थिले New Zealand. Fiji रे जो माने born है छंती 15,000. Other countries रे only 2,000. माने highly restricted.
second generation of New Zealand born Indians 12,000 total एतिकी करथिले. So it was a result of group migration in several subgroups in Indo-Fijians with different religious linguistic identities jadwara se mane jai pathile. And out example it can be cited it लिखा है जे Indo-Fijian Muslims जो माने थिले से माने slaughterers माने लेकी बुचर भया काम करथले मीट सप्लाई मीट इंडस्ट्री रे ये करन तेनो ताको पे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ए जो इंडस्ट्री टा प्राइमरीली मिडल ईस्ट कंट्री रो आस्तिला नहले as such they were not allowing any non white तेनो जदि हम पचारिबा who are Indians in Australia Indians are the first and the small traders and plantation workers जो माने कि बनाना फार्मर्स थिले किछि जो स्पाइसेस गोलमरिच को ये को से स्पाइसेस ग्रो करौथिले टैक्सी ड्राइवर्स थिले एंड ए कैटेगरी रो एंड मोस्टली दे वर नोटेबल फॉर इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्स जे कि घरे काम करि परिबो बोथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे जे काम करि परिबो से टाइप एंड इंडो-फिजियंस वेर इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को बहुत जाउथिले स्किल्ड वर्कर्स को कथा बहुत परे आसिला जेटा कि एबे रिसेंट फिनोमेना इंडियन डायस्पोरा जो तमे देखिबो त अर्बन सेंटर्स मोस्टली ऑकलैंड वेलिंगटन ए सब जगह थाए एंड इंडियन पॉपुलेशन ए सब सिटीज रेट्स अबाउट 45% now and there are student communities from India both कमेट ऑस्ट्रेलिया रे भी पाइबो न्यूजीलैंड रे भी पाइबो डेमोग्राफिक से देखिबो 18 to 39 एज ग्रुप रे कोन होची ना ये गोटे रहउची तमे कि देखो बिलो 1523 सबटो अधिकार होची 15 to 39 एज ग्रुप और बाकी प्लस 65 रे मात्र 4 this is the age distribution and in terms of education Indian presence in the A and O level is well documented they are doing well in the schools and attendance percentage are high though the gender differentiation upon the exist karuchi in education in there work participation rate dekhibo 46 to 48% work participation is there unemployment rate is 29 to 31% जोटा कि एक सिनेरियो तमे यूएस रे पाइबनी यूएस रे हम देखले 95% एटी किंतु almost 30% अछंती अनएम्प्लॉयड region of origin and religion को region of origin रो अधिका न्यूजीलैंड रे अधिका कोको माने अछंती 90% of the people were Gujarati Hindus New Zealand then comes the Punjabi Gujarati and Punjabis will find almost everywhere and 80% of the Indian diasporic population in New Zealand are Hindus. So mostly they are Hindus and mostly they are first category is Gujarati, second category is Punjabi. Then if you look at the health issues of the Indian diaspora and New Zealand, you will find that Indian diasporic women have more neglected health aspects than men. जोटा कि India रे भी से women they are actually we have a tendency to neglect health तमे देखिबा जे unless things become unmanageable से माने डॉक्टर पाक को जिबा को राजी होते because the culture is they don't give attention to themselves because men बाहर को जिबो पैसा अन करबो से ठीक सुस्त रहबाटा भलो जिंस तेनो living with the pain हां एटा तो वे अंटा तो थोरे सब कंप्लेन करथे but they never so you will find same tendencies with these Indians in New Zealand both women and men have higher rates of diabetes and they live in considerable stress and poor housing conditions. So New Zealand रा scenario टा Australia ठारू भिन्न. Australia रे living standards बहुत भलो अछि इंडिया रे. एठी टिके lower scales इंडिया ना में देखिले जे professionals बहुत कम आ अल्प अछंती किंतु mostly because naturally सेटा गेट खोलिला 86 रे but the thing is that तमे देखु जे हमें देखिले कि जे basically domestic workers taxi drivers ए category बेसी पाइले हमें rather than high skilled. Then identity formation within Indian diaspora in New Zealand. What kind of identity formation constructs they adopt? It is the first wave of immigration brought Indians as laborers. Okay, and house workers. घर जो माने काम करबे जो माने लेबर काम कर परिबे.
So there was intense discrimination, exploitation. White men mane सबुबले discriminate कले, and other migrant communities को माने थिले ना Chinese. Chinese माने केबे का संगे मिसिबेनी. से माने तांकर they were inward looking. So much so that the rituals or norms of Indian society were maintained. जेहेतु तांकर संगे केही मिसिलेनी. ना चाइनीज मिसिले नॉर्मली अदर माइग्रेंट कम्युनिटी खाली चाइनीज थिले इमान त काकु बेसी अलाउ करनांती आ न्यूजीलैंड कम्युनिटी केबे मिसिन इंडियंस को संगे तो से माने बाध्य है कि तांको एथनिसिटीटा मेंटेन हिच न्यूजीलैंड रे माने जेमति आमे देखले कि ऑस्ट्रेलिया रो सेकंड जनरेशन रे से माने पूरा आइडेंटिफाई कर सरानी निजको एज ऑस्ट्रेलियंस दैट यू विल नॉट सी इन न्यूजीलैंड कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन कास्ट प्रैक्टिसेस को हमें रिगरसली फॉलो करूछु एबे भी छियो इंडिया रो खोजा जाउची कि ग्रुप मोर इंडिया रो खोजा जाउची जॉइंट फैमिली सिस्टम फैमिली वीजास ए सब कम्युनिटी प्रैक्टिसेस पूरा पूरी चली and here you will see that they adhere to the language of origin जैसे कि फिजी रे पूरा पूरी मेल्ट करी है they don't even know some part of India I was once talking to a Fijian when I was in Australia ताको जेकर पचारली को part of India he had no answer ना it was 100 years back how do I know you know they don't have but New Zealand रे जदि तमे सेही कथा तमे पचारिबो से माने कहिबे जे ना से माने सेही भाषाटा यूज करछथि they know they are conscious of their ethnic identity सेही जो कॉमनैलिटी अछि कास्ट रिलीजन सेही प्रैक्टिसेस ता एबे भी से माने फॉलो करछथि रीजन एया हे पारे से माने एक्सक्लूडेड हे गेले दैट कुड बी द रीजन दे हैव and you will see that second generation of New Zealand born children of original immigrants face double trouble. They either cannot identify with the exclusion dynamics of societal identity formation practiced by the parents, nor are they used to discrimination practices by the mainstream. माने जेतु फर्स्ट जनरेशन आसी छंती से माने जानि छंती हमें एलियंस तांको पे से माने एक्सेप्ट करिबेनी हमें दूर हे कि रहू किंतु जो माने सेठी जन्म होई छंती अरे मु तो सेठी ता संगे स्कूल रे पढुची जेटा मु ये करूची से करूची सेटा काहे कि तांको पे आहुरे डिफिकल्ट ना से माने असिमुलेट हे करछनी ना पूरा पूरी इंडियन हे कि रहि करछनी and they have they are a part of the mainstream society they still have this distinctiveness I mean culturally gote olga group bhaliya they stand out maybe dress hela food preference re hela and there is also tension between the Indians o Indians na directly जो माने इंडिया रो माइग्रेट करछंती आ जो माने इंडो फिजियंस तांका भितरे बहुत टेंशन अछि बिकॉज़ फिजियंस से माने पूरा पूरी ताकर इंडियन ओरिजिन को बे भूली सारने तेनो से इंडियंस को से माने इंडियंस बोले देखुछन से माने निजो को फिजियंस बोले भाउछन दैट इज द रीजन again as usual Hindi film industry has a lot to do with this community feeling of the New Zealanders. Now we will talk about Indians in Fiji. We were just discussing the Australia is just Tinita country and the third is the small island called Fiji. Fiji's interaction with Indians began when Indian sailors went aboard the European ships that sailed the South Seas. It was in 1811 that the first Indian sailor named Achola से तारो फिजी रे तारो गुड़ पाद पकेला सेटा शिप छाड़ देला शिप ना थिला हंटर एंड से 2 वर्ष सेठी रही गला बिफोर मूविंग ऑन टू सोलोमन आइलैंड आउटे सोलोमन आइलैंड ता पाखरे अछि रेस्ट ऑफ द लाइफ से सेठी रहिला माने लोक से टाइम रे डेयर करूथिले माने न फेरे कि सेठी बाटरे कोठ रही जेबी ये करबी दैट वाज अ ग्रेट थिंग डायस्पोरा रो ब्यूटी ता सेटा these adventurous genes that they had. And there are many descendants of Achola in the islands of South Seas. This is perhaps the beginning of settlement of Indian diaspora in Fiji and other islands. So sketches of such interaction are scanned. बेसी किछि आ ऊपर काम नाही किंतु किछि हमें ट्रेसेस पाउटी जे ओरिजिन फाइट हेछि गोटे लोक ओली पडला तार किछटा वंशधर रो इंडियंस रहिछन्ति Fiji witnessed what you will see that there were certain arrival of indentured labor first time के बेला 1879 हला टिके परे हला अन्य देश रे त हमें देखले 1830s रो आरंभ हो जाय छी to work on cotton and
sugar plantation ୟାଙ୍କୁ କୁଲି ଲେବରର କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ସୁଗର ରିଫାଇନିଂ कंपनी ଥିଲା ସେଇଥିରେ and 1879 to 1916 बहुत इंडियंस फिजी को आसिक रही ये जो एक्सपीरियंस ऑफ दिस लेबरर्स वेयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस बहुत लोग मरी गले बहुत सुसाइड करतेले बहुत ट्रेजिक स्टोरीज अछि फिजी टर्म कॉन्ट्रैक्ट विषय जो कहथि 3 वर्ष और 7 वर्ष भीतर एठी आंक केस रे 5 वर्ष होतला आ जदि जो माने फिजी हो फिजियन होबा को रही गले से माने को माने they were included a free passage to India ताले 10 वर्ष कंप्लीशन परे से माने रही पड़थिले जो माने सर्वाइव करले 60% से भितर the state bank से माने फेरी की गलेनी 60% because we don't know एते बाटा समुद्र रे एबे हमको फ्लाइट रे लागि जाउची डायरेक्ट फ्लाइट रे अराउंड 14 आवर्स नहले 22-23 घंटा सेही टाइम रे से माने जाउथिबे ओसी रे केते लोक बंचिबे मरिबे से जो डरटा सेते मोस्ट ऑफ देम स्टेट बैक देयर the domination of this colonial sugar refining company which sugar production होता plantation business तो labor का almost industry of agriculture editor ने की चलता and the laborers who had elected to stay back were encouraged lease land याको भी land दिया गला नेटिव जो फिजियंस माना कोठो लैंड दिया गला से माने सुगर कैन प्रोडक्शन करले कंपनी प्रिफर्ड दिस सिस्टम तांकर भी डिपेंडेंस रहिलानी रॉ मटेरियल कोठो आनिबी सुगर कैन कोठो आनिबी तेनु मु निजे प्रोड्यूस न करले भी मोर जो लोक माने खंडे खंडे जमी दे देले तो सही माने मते वर्ष सारा जोगेबे कंपनी को भी प्रोसीजर सूट कला इंडियंस मान भी कला तेनु दे लेट द बेस ऑफ सस्टेन्ड डिवाइसिव टेंशन बिटवीन इंडियन डेंचर्ड लेबर एंड नेटिव फिजियंस तो सब बळे ओटे क्लास रहिला ये जो इंडियन लेबरर्स जो माने आसिक रहिले और फिजियंस जो माने ऑलरेडी नेटिव थिले कि अरे से माने कोन रोजगार करेनी से माने हमर सब जमी किनी नै गलेनी ताको कोन कंपनी एमपी दे दोची and businessmen and other workers reached there as independent workers they were free migrants आसुथले जाउथले सेलर्स भी आसुथले जाउथले शिप छाडी देकी बडे बडे रहि जाउथले बडे बडे पुनी फेरी जाउथले किछि दिन परे स्मॉल ट्रेडर्स आसले जे दुटा बाटरे पड़ी जाए and people could do that so here you will see that sailors deserting their ships in Fiji and other South Seas settle as a small trader. With the progress of indentured labor, you will see that there is a rise of what you say immigrated willingness. जो माने कि ना हमें माने they were माने से माने सेठी रहिले गोटे एग्रीमेंट करले कि से माने ए जिंस करिवे ये करिवे गोटे गोटे सिस्टम ऑलरेडी ये ही जाइछा जो इंडेंचर्ड लेबर रे कि एति की पैसा नै कि जिबी सेठी गला पर ये करबी तापर कंपनी मो संगे एति की मूल तोल कला म ताकू माननी गली रहिबी कि म फेरिबी जदि भी फेरिबी मु एआईएस मोर कॉन्ट्रैक्ट रहइबो मु निज पैसा देबी कि जहा करिबी so indentured laborers who decided to stay but did not want to work on land कारण से माने बे भाबिलेनी जे हमें स्मॉल बिजनेस कर परबा किछ काम करे माने आ चाष करबो एमिति माने 150 40 शॉप कीपिंग लाइसेंसेस दिया गला इंडियंस को 192 हॉकिंग लाइसेंस जो माने कि बिकी परिबे दुकान दे परिबे बहुत इंडियंस जो माने कि ज्वेलरी बिजनेस रे एंटर करले गुजराती वेयर ऑलवेज दे हैड दिस बिजनेस स्किल्स तेनो से माने किछटा से लेबरर से माने चाष छाडी कि तापर बिजनेस को डाइवर्ट करले and Gujaratis were the largest community of traders in Fiji. Ebebi. Major trades controlled by them: cotton, hella, dress materials, hella, also products like India, Wananti. Punjabi community transport, money lending, ये सब काम में engaged अछि. Out of it, मुझे कुछ uncertainty रहती सब बड़े agricultural sector. क्या सब बोला होगा ना होगा तो से मैंने सब बड़े business तक बेसिक prefer करे. And जदि हम ताको रिलीजियस अफिलिएशन देखिबा हम देखिबा कि जे you know you will find that organized आर्य समाज सेठी अछि क्रिश्चियन चर्च अछि मुस्लिम लीग अछि सब प्रकारी अछि and large number of people of various professions it government workers हे जैछन्ती टेक्नीशियंस हे जैछन्ती आउ हठात 1960s परे इंडियन डायस्पोरा फिजी रे गोटे ताकर ग्रोथ देखिया मिलथिला and they constituted more than 50% of Fiji's population. By this time, Indo-Fijian
फेस जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस का बहुत इंटेंस हे जाइतला ताका भितर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होतला मोस्टली ताकर के माने से टाइम रे फिजिया आई थिंक आई रिमेंबर ओके कू भी हेतला बिकॉज़ ऑफ दीस डिफरेंसेस मिलिटरी कू हेतला talking about the social integration in Fiji but 1974 ହେଲା फिजी का इंडिपेंडेंस पाइला 1970 ପରେ इंडो फिजियन समस्ते फिजी रो नेशनलिटी नै गेले सेठी आउ सेठी डिस्क्रिमिनेशन हेलानी कि जे ये फिजियन सी इंडियन से जिंस आसिलानी and the condition only deteriorate କରିଦେଲା because they were not granted any rights over land they cultivated ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ କରୁ ତା ଉପରେ ରାଇଟ୍ ମିଳିଯାଉ ସେଟା ରିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ କାହିଁକିନା ଲିଜ୍ ରେ ଦିଆଯାଏ 30 ବର୍ଷ ପରେ another 30 ବର୍ଷ ସେଟା ରିନ୍ୟୁ କଲେ long term security sense of belonging it has been absent and that is why education of children became such an obsession of Indo-Fijians and their success in education against all kinds of odds has been Fiji's overwhelming achievement. Fiji रो political condition जदि देखिबो you will see that slowly Indian diaspora community it's seen as an enemy काहे धीरे धीरे से पावर ये कर दोची इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हे जाउची तेनो there is this apprehension गोटे सबले तांकर रहउची and it is projected as Indian girmit meaning agreement the term means agreement people a synonym for indentured labor माने ए जो मैनुअल लेबर जो आसीथिले 19th सेंचुरी रे से माने बे सबटु ग्रेटेस्ट एनिमी तेनो गिरमितियाटा गोटे नेगेटिवली गोटे गाली भलिया से माने यूज करंती अगेंस्ट इंडियंस they still have that othering for Indians because and you know case of land ownership जदि देखिबो it has been disproved since and बहुत ए दिजणा कम्युनिटी भितर सब बळे मल्टीपल टेंशन्स रहिछि लैंड को नै की बिजनेस को नै की आउ फिजी रे मोस्ट ऑफ द ओनरशिप राइट्स इज हेल्ड बाय द नेटिव फिजियंस 87% इंडियंस ओन स्टिल लेस देन 2% लीज होल्डर्स को माने ना इंडो फिजियंस दे हैव ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड इन नंबर माने सेही जो प्रलोभन देखि कि से माने रहिथिले एंड एट द एंड ऑफ द डे जतेबे फिजी इंडिपेंडेंस पाइले ताको सेटा छड़ाई नेला कि एटा बहुत बाधिबो बाधिछि so when the leases were granted in the 1970s it expired they were not renewed land का सब लीज रे दिया जाए सेटा 100 वर्ष पे दिया गला पुणी और रिन्यू हे गला 30 वर्ष पे दिया हैला जेटा कि नॉर्मली रिन्यू हे जाए ताको रिन्यू करा गला तेनो that conflict still exists between them and benchmark of the division now to and plight of Indo-Fijian communities is in 1987 जेतले डॉक्टर गभर दास कोन हैला ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जेतले ओवरथ्रोन हे गला गोटे जो मिलिटरी कू कथा कहउतली 1987 रे सेई टाइम रे गोटे विराट बडो माने कॉन्फ्लिक्ट हैला ए जो दिस कू वाज इन डिफेंस ऑफ एथनिक फिजियंस की इंडियन माने ताको एक्सप्लॉइट करछंती इंडियन माने सब नै जाउछंती तेनो फिजियन लोकंग पे एटा गोटे हेल्पफुल होला and it resulted in the constitution of the 1990 which ensured political supremacy of ethnic Fijians अब reserve senior positions के prime minister president एटा खाली फिजी रो लोग ethnic लोग ही परिबे इंडियन से ही परिबे so it allocated nearly 54% of seats in the house of representatives to the ethnic Fijians you know that was the sad case of Fiji and it all resulted in immigration Fijians माने जिबे केमती से indentured labor time से माने सेठी रहि जाइथिले इंडिया सहित ता कनेक्शन नै they don't even remember the roots ता घर कोन ता गा कोन को जनरेशन तळे से माने आसीथिले एबे मु जिबी पड़े एबे हठात ए माने मते डिजोन करतेले तमे एठिकार लोक नुहे तमे बाहर लोक हठात मते एते वर्ष पर एते जनरेशन पर एटा कुआ जाउची तेनो they had to migrate to Australia to New Zealand ई सब पाखा पाखी जगह को बिकमिंग वाइस माइग्रेंट्स कारण इंडियंस तमे बे बेसी पाइबनी तमे बेसी इंडियन माइग्रेंट्स पाइबो जो माने फिजी रो माइग्रेट हिचंती किंतु से जो फिजी माइग्रेंट आउ इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो माने इंडिया रो ऑस्ट्रेलिया जाई छंती तांको भीतर भी बहुत टेंशन so about 77,000 Indo-Fijians left the country to other destinations primarily Australia and New Zealand between 87 to 90 दिन वर्ष भीतर जे जारा छड़ा छड़ी हेके पळेले
तापरे the racially biased clauses were deleted by the new government again on democratic principles. जो है कि 1999 रे हैला headed by Mahendra Chaudhary was an Indian. से एडा को सब delete करे. This government once again was overthrown by another military coup. पुणी गोटे military coup हैला 2000 रे. से government को पुणी भांगी देला. କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିବ ସେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ଫିଜିଆନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାଇଟ୍ସ କିଛି ଇଏ ରଖିଲାନି and today if you see Indo-Fijians account for 42% of the island's population. This was the land where indentured labor had settled thereafter lived on. माने से माने जायकी सेठी कल्टीवेट करछंती सेठी इंडस्ट्रीज तयारी करछंती and at the end of the day they don't have a right over that. सेटा हेची गोटे डायस्पोरा कम्युनिटी रो पेन जे कि तार सब किछि देई देछि से लैंड को तांको तांको आइडेंटिटी आ जणा नाही एने से माने तांकर इन न्यूजीलैंड केस रे हमें देखिले जे से माने स्टिल गुजराती रे कथा होछथि स्टिल पंजाबी रे कथा होछथि किंतु फिजियंस को पचारिबो से माने को पार्ट ऑफ इंडिया रो जायछथि ताको वंशधर को से कहि परिबेनी इट्स बीन एजेस से जिनसना मेंटेन हेनी एबे से माने क्वाड जिबे दे आर पीआईओस किंतु को पार्ट ऑफ पीआईओ दे डोंट हैव ए कल्चरल आइडेंटिटी तने से माने निजको पूरा फिजी रो कम्युनिटी सहित मर्ज कर देथिले बट एट द सेम टाइम इटा होचोटा इटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायस्पोरिक कम्युनिटी हम देखिले ए जो crisis टा आउट को कम्युनिटी सहित हेनी so here you will see that they have no right to be in the nation out of बहुत कष्ट देछि तांको so through generations Fijian Indian diaspora knew no other nationality other than Fiji आउट तांके भी लागु छि कि हमो होमलैंड तो इंडिया है इंडिया कोन हम जानि दिबि आ पूरा पूरी डिस्कनेक्टेड हे जे जीव इंडिया सहित मु फिजी सहित कि मते फिजी रे रहया को दुना that is the case with them. So the conditions that they are faced for such a situation that is varied. The Fijians and the Indian community inhabit two cultural and social world. They just when Australia रे कि New Zealand रे भेट होई जिवे they don't identify with each other. Fijians are like Fijians. ना India सहित हमें कुछ नहीं. दीटा अलग cultural world. The tragedy of Fiji has been that Fijians and Indians live in separate cultural world. It began with colonization, migration, plantation, continued with communal representation and institutions, different schools, places of worship, lifestyles, villages, ritual practices, different languages, sense of reality. से माने जेहेतु पूरा फिजी भीतर रही गले, से भीतर से माने मिश्रित हो गले. And existence and persistence of such communal divide is most situation is a problem. And Fiji is an exception. Religious divide is there, and majority of Fijians just Hindus thile, but over the years semana be Christian he jaychanti, and they cannot understand or tolerate other religions. This is the cause of the ready acceptance and mergence of immigrant Filipinos with native Fijians. Intermixing hochi Indo-Fijians, Fijians in terms of intermarriage भी बहुत किछि रहुची से माने मीनिंग कहां संगे एते मिसी परिबेनी एते कंट्रास्ट करि परिबेनी माइग्रेंट ग्रुप संगे ताकर बहुत बैरियर्स लागुची रहुची लैंग्वेज बैरियर्स भी रहुची and there is also a lack of respect for and domination of one society by the other. It leads to resentment. So the new generation of both the groups they interrelate to each other. They don't interrelate to each other, and there is this form of crisis. तमे जति ड्रेस किंबा फूड हैबिट्स देखिबो भी इंडो-फिजियंस करो इट इज डिफरेंट तांको सेरेमनीज तांकर इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नेटिव फिजियंस तांकर गोटे कोन कहलो इंडिया सहित से माने आ किछि कल्चरल फॉर्म्स आट माने आट पार रखि नाहंती से माने जोटा को निजर कर देछे सेटा भी तांको बाहर कर देछि तेनु ना से बे फिजी संगे मिसि रहि पारु छंती फिजी रे ना इंडियंस को सहित मिसि पारु छंती तेनु गोटे डायस्पोरिक कम्युनिटी है कि से माने सेटा सफर करछन जेतले ऑस्ट्रेलिया रे तांको इंडो फिजियंस कहछन जे अच्छा इंडियन डायस्पोरा संगे तुमको गोटे टीम रे हमें रख देबू ना हम इंडियन नुहे हम फिजियंस वी आर फिजियन माइग्रेंट्स बट दे आर एक्चुअली द ट्वाइस माइग्रेंट जो माने कि इंडियन केस रे हमें पीओआईस कहिबा बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. So here you will see that the native Fijian society gives more importance to race and concept of blood as the main line of inheritance and identity. Whereas migrant Indo-Fijian community
it is the place of origin for them. Se mane कहउछन्ते जे आमे तो फिजी रु आछि किंतु नेटिव फिजियन ना 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 your blood is different, तमे आमो रेस रो हि तमे completely different. तेनो এই जो डिफरेंसेस होची फॉल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नेटिव फिजियंस को भीतर होची जेटा कि डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करूची सेटा पूरा फिजी सोसाइटी टा को बर्बाद कर देला जो मल्टी एथनिक सोसाइटी थिला फिजी रे Indo-Fijians you will see that they continue to live in Fiji as those who recognize that Fiji is their homeland মানে যেতে অসুবিধা হোক যা হোক ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଆଉ ମୋ ଘର ତ ଏଇଟା କରିଥିଲି ଆଉ ମତେ ଜମି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି କରିବି ତେଣୁ still you will find them. Although many of them have migrated, अधिकांश migrate कर सारिलानी spiritual homeland मने मने physical homeland रखछन्ती and but they have migrated. They do not adhere to India as a parent nation. से माने केबे गोटे Fijian को पचारिबो से कहबो हां मोर ancestors for the Indians थिले किंतु से केबे निजे कहबेनी जे मो गोटे Indian बोली जोटा कि न्यूजीलैंडर कहबो गोटे ऑस्ट्रेलियन कहबो कि जे हां we are Indians by origin, but a Fijian will never say that. So the part of the diaspora that lives on this island of Fiji is contributing enormously to the growth of Fiji as a nation. So it is hoped that their growth is potentially recognized. So this is about these three streams. I mean, tinita ave country discuss kale. Australia, New Zealand, and Fiji. And ame dekhile je more or less they had different trajectories, but you will find unique stories. तीनटा अलगा देश गोटे कॉन्टिनेंट रे तीनटा देश जोटा कि मोर और लेस गोटे प्रकार हिस्ट्री तांकर थिला हिस्ट्रीटा कोन ना समस्त इंडेंजर्ड लेबर हे कि ही जाई छन सेथरे किछि नूतनत्व नाही सबठी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को किबा फिजी को एई जगह गुडा करे सुगर कैन प्रोडक्शन होची सुगर कैन प्रोडक्शन पे ही एमान इंडेंजर्ड लेबर हे कि ही जाई छन किंतु देखो तीनटा अलगा कैटेगरी ऑफ कल्चरल फॉर्म्स बाहरी छी जो माने ऑस्ट्रेलिया रे रही गले जणा नाही तांकर आउट ट्रेस नाही बंची माने तांको मार दिया गला कि कोन हला वी डोंट नो तांकर आउट किछि हिस्टोरिकली किछि रिकॉर्ड नाही से जो इंडेंजर्ड लेबर मानकर फिजी रे तमे देखिलो गोटे पॉइंट पर्यंत से माने बहुत भलो रे थिले तापरे ए जो क्लास हला परे दे हैव हैड ए मिजरेबल लाइफ एंड केस ऑफ न्यूजीलैंड रे अगेन गोटे अलगा प्रकार सिनेरियो जो माने रहि जाइतले कि हां किछटा रहि जाइछंती बट से माने दे आर इकोनॉमिकली नॉट दैट वेल ऑफ एज ऑस्ट्रेलिया तेनु तीनटा क्लास एटी क्रिएट हो जाउची ऑस्ट्रेलिया एबे मोस्ट प्रॉस्परस एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न काहे कि ना जो लेटर माइग्रेंट्स जाइछंती जो माने कि 70s पर जाइछंती से माने सब प्रोफेशनल से जाइछंती से माने नॉन ऑस्ट्रे माने से माने अनस्किल्ड लेबरर नहीं से माने जोठी भी जाई छथि आज प्रोफेशनल्स बहुत भलो करछथि दैट्स द रीजन से माने गोटे भलो पोजीशन पाई छथि न्यूजीलैंड रे इट्स द लैंड ऑफ हम जो देखिले कि सेमी स्किल्ड personnel then you will find there either people of manual labor or housemates a category then it has a different class then they are not economically that well off अब फिजी रे at one point of time they are very well off तापरे गोटे point रे they knew that you know we have to survive we have to thrive आ सेटा करिया को हेले तुमको माने अछि मु लास्ट क्लास रे कहथि तरे महात्मा गांधी जाई छथि मॉरिशस से गोटे इंपोर्टेंट एडवाइस दै छथि जे as migrants तम पे गोटे एसेट होची जे you educate your children because education is an asset तमे यदि educated न होबो तमे गोटे नुवा लैंड रे सेति की रेस्पेक्ट पाइबोनी तेनो Fijians today they are you know they are completely mad for you know educating their children because they know the importance of education once mo छुआ माने केमति पाठ पढिबे केमति educated हे गले कि बेटर हे जिवो कि हमर लाइफ बिकॉज़ तांका पखे वन पॉइंट ऑफ टाइम रे सब किछि थिला they were doing so well agriculturally industrially से माने बिजनेस रे जाउतले सब करतले एंड हठात पॉलिसी चेंज हे गला गवर्नमेंट तांको जागा छड़े नेला तांको प्रॉपर्टी छड़े नेला तेनो एमिति किछिटा विचित्र केस अछि बर्मा रे जेमिति फिजी रे जेमिति मलेशिया सिंगापुर एते न होले भी किछटा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी थिला अफ्रीका रे हम केनिया रे उगांडा रे देखले से मन तो पूरा बाहर कर दवा को चाहिले से माने कहले जे तमे जदी न मिसिबो तमे पूरा पळेई जाओ तेनो सब जकर केस डिफरेंट
माने अफ्रीका रो केस फिजी संगे भी सेम नुहे फिजी रे दे नॉट इवन अलाउड माने किछि तमर राइट नाही किछि नाही तमे जस्ट गोटे सेकेंडरी सिटीजन है कि रहिबो फॉर्मर सेमती जहा प्रॉपर्टी थिला इंडियंस मानको सेटा नेशनलाइज कर देला कि गवर्नमेंट रो प्रॉपर्टी इंडियंस मानको प्रॉपर्टी माने गवर्नमेंट रो प्रॉपर्टी अफ्रीका रे कोन हैला अफ्रीका रे से माने कहले सब छाडी के पळाओ तमरा अफ्रीकन पासपोर्ट तमे केनिया रो पासपोर्ट नबो को बेसिस रे नबो अच्छा तुमको देबे कि न देबे सेटा गोटे कथा आ जदी देबे तमे तमर आइडेंटिटी पूरा अफ्रीकन कर देबो तमे आ सेठी कहबेनी कि जे मो गोटे इंडियन डायस्पोरा मो कल्चरली इंडियन मो डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन नो यू आइदर स्टे और यू लीव तेनु सेठी समस्त माइग्रेट हेकी पळेले तेनु देखो दिथर के माइग्रेट करची कि तीन थर माइग्रेट करची आ सब जाक स्टोरीज ऑफ माइग्रेशन किंतु से जो स्टोरीज ऑफ माइग्रेशन भितरे भी यू विल फाइंड सच यूनिक टेल्स जो थे कि कहा क्राइसिस केमिति एठा ए पोजीशन ता एठी एम्ति काई हैला सेठी काई सेम्ति हैला सपोज न्यूजीलैंड रे से माने काहे कि तांकर समस्त इंडेंजर्ड लेबर थिले समस्त सेठी जो आमे जोटा को दादन श्रमिक कहि कि जाय कि चाष करिया को जायथिले प्लांटेशन साइट्स को किंतु न्यूजीलैंड टुडे इज द ओनली प्लेस जोथरे कि से माने खाली इंडियंस है कि रहि छथि सेही कास्ट प्रैक्टिसेस तांकर सेही माने कस्टम्स से पूरा पूरी इंडियन ही कहउछथि इंडो न्यूजीलैंडर्स माने आ इंडियंस को भितरे यू विल हार्डली फाइंड एनी डिफरेंस किंतु सेठी ऑस्ट्रेलिया रे बे मिंगल करि सारछि गोटे डिफरेंस आ फिजी रे तो से भूली जाई छथि से कोठु आसी छथि तेनो देखो एका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एका टाइम रे जाई छथि किंतु तीनटा डिफरेंट फॉर्म तमे काहे के पाइलो दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट डायस्पोरा स्टडी नले बहुत जण कहबे कि जे हमें व्हाई शुड वी टॉक अबाउट डायस्पोरा डायस्पोरा रे एमिति कोन अछि ओके एनी क्वेश्चंस हेलो मैडम हां को हेलो यस आई कैन हियर यू नमस्कार को मैडम मैं को बुक पढुथिले मैडम एटा होची तमरो ब्लॉक 3 ब्लॉक 3 रे एमएसओ ई 2 MSO2 डायस्पोरा जोटा स्टडीज तमरो डायस्पोरा पेपर एमएसओ जोटा ई 2 तम E2 कोड तो मैडम मु आ बुक म जाने नहीं हाँ MSO E2 करेक्ट आज्ञा सर जो आउटे सर तुम वॉइस शुभुनी हेलो 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 कोन मैडम कोन हेलो हां सर हां जो हमर एमपीएस और एमपीए बुक कोन कहले मैडम एमपीएस और एमपीए बुक कोन से तो MSO E1 2 3 4 अछि हम तीन चारटा बुक अछि तो जो एमपीएस और एमपीए जो बुक रहउची से कोन गोटे कंप्यूटर तमे कोन पेपर ऑप्ट करिजो मु चूज करछि MSO तम वॉइस किछि शुभुनी हेलो हाँ कोन मैडम तम आपण वॉइस कटुची आज्ञा सर तो मु कोन MSO E1 2 MSO E1 2 3 4 बुक चूज करछि कोन हला चूज करते कोन हला तापर अच्छा एमपीएस और एमपीए बुक रहउची से कोन से ऑप्शनल ना कोन ऑप्शनल ऑप्शनल कंपलसरी MPS 3 ताको बुक रे MPS 6 is optional आर कर आज्ञा हमर जो फर्स्ट ईयर रे केते टोटल मार्क्स केते होची रहउची आपणकर each course is 8 credit जेमते MSO 1 2 3 4 that is 8 credit MSO E1 E2 E3 E4 also 8 credit आज्ञा
ଆଉ କିଛି questions ଆଉ କାହାର? କିଛି କାହାର questions ଅଛି? Yes, anybody has any question? Chalo, thank you, ma'am. I mean, for your nice presentation. So, today, same time, student, you will join once again. So, thank you very much, ma'am. Today, I am Thank part you, of the sir. class. Okay. Thank you. Stop recording. Enter. Stop recording button.